All right, my friends, welcome once again to all of you to all the powerful and soul nourishing YouTube जो आज के सेशन में हमारे आए हुए हैं. So, and I'm sure you know me. I'm your host Prashant Seni, Miracle Mindset Coach, and I'm absolutely thrilled to have all of you here. I welcome all of you here, each one of you joining us live tonight. And a very special welcome to our guest of the evening, the magical and deeply intuitive Aashi Rastogi, a gifted tarot reader and spiritual guide. You know, her insights have touched and transformed many lives. Our Saturday evening है, and it's a time like when most people are either caught up in social media, binge watching Netflix, or feeling drained by the week. But अगर आप यहाँ पर हैं, then you made a different choice. You chose to invest this time in yourself, in your spiritual awareness, and in understanding a mystical tool that has guided thousands, or I should say millions, in the world, and that is tarot. Tonight, आज का टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है. So I'm sure that many of you should be curious about कि क्या है, because you don't sometimes or you don't fully understand tarot reading, like ये होती क्या है, काम कैसे करती है, क्या ये सिर्फ कार्ड्स हैं, क्या इनमें कुछ एनर्जी है, या क्या और डीप में है कुछ, राइट? सो वी विल एक्सप्लोर द मिथ्स, द मैजिक एंड द माइंडसेट बिहाइंड टैरो. And yes, uh, I hope she might be doing some live readings for some of you. So we'll be, interactive in the session. So grab a notebook, open your heart, and let's enter a space of deep insights and divine guidance. Because ये कहा जाता है कि इसमें जो भी आपके कार्ड्स आते हैं वो डिवाइन गाइडेंस होता है. और इससे पहले कि मैं इस चीज़ इनको हैंड ओवर करूँ, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा. आशी रस्तोगी, शी इज़ अ सर्टिफाइड हो'oponopono healer also, ho'oponopono and EFT healer, and she is an intuitive tarot reader, and she's been into this field for past more than, I should say, 4 years. And she believes in holistic healing and living in abundant life while helping others to create abundance and live a meaningful life. So if you are excited, just type welcome Ashi, and Ashi will be talking to you for next 30 to 35 minutes, and then we'll have a Q&A. So without any delay, let me call her. Ashi, welcome, and over to you. Thank you so much, Prashant sir, for giving me this opportunity. And I want to thank each and every person out there who helped us to do this live today. Thank you so much. And hello, everyone. My name is Aashi Rastogi. I'm a certified Ho'oponopono plus EFT healer and also an intuitive tarot reader. Welcome to a very mind blowing session today. We are going to rock it, and I'm going to tell you so much about the tarot that you have never heard before. तो आज बहुत सारे मिथ्स बर्स्ट होने वाले हैं, बहुत सारे आई ओपनिंग सेशंस होने वाले हैं, तो आई होप यू स्टिक अराउंड टिल द एंड. ऑलराइट, so before I begin talking to you and telling you about tarot, let's just take some time to settle down, ground our energy, and I want you all to take a breathe in. Okay, so we are going to take three deep breaths in so that we can ground our energy and finally be in the session. Okay, so close your eyes, take a deep breath in, breathe out, second deep breathe in, and breathe out. Last, breathe in and breathe out. Okay, amazing. So I hope you all are very well present here, ready to listen and ready to explore the mystical, magical, amazing tool that can help you change your life. Like 180-degree shift we are going to do today. All right. So let's begin our session. You can grab a pen and paper if you wish to, or a notebook or a pen to write down all the mind blowing or aha moment that you got throughout the session. Let us begin. Yes.
Oh, okay, got it. Yes. So before I unlock the mystical world of tarot before you, I want to tell you my story and how it all started so that you can make your decision and the best one at the end of the session. Okay. So my journey with tarot started in the year 2023 when I finally decided to learn tarot. Now, let me tell you, never in my wildest dream I thought that I would become a tarot reader. Because if you know about these modalities, these mystical, magical modalities, whether they are healing, spirituality, or tarot, they choose their people. They choose who are they going to hand over the knowledge, right? So with me, the same case happened. So I have been intuitive for like 4 years back. I know that there is inner calling of me that tells me the answers, that tells me what is the right answer. But sometimes we just refuse to listen to it, right? So I have been getting this intuition that want to learn something new, learn something mystical, but I used to ignore it. I'm like, and when you ignore a voice, when you ignore that voice, it fades away. Okay, it goes away. It's like, ठीक है, ध्यान नहीं दे रही, जाने दो, let it be. Right? But again, the universe was working in my favor, so I got one of my client, healing client. She is the oldest client I had. तो उसको ना अभी थोड़े टाइम पहले 2023 में उसको एक डिसीजन लेना था टू गेट अ जॉब और नॉट टू गो फॉर द जॉब. सो शी कॉल्ड मी, शी इज लाइक, आशी, should I go for the interview or should I no god not go for the interview because I'm confused यार, मुझे समझ नहीं आ रहा. So we have developed like a friend kind of a relationship. So she like genuinely called me and asked me. And while she was talking to me, I get this inner voice so strongly that to tell her that go for the interview. Okay, go for the interview, you will get the job. And I just listened to it and I said, go for it. And you won't believe she went there for the interview. It was a government teaching job which highly accepts people. वो गई वहां पे and she cracked the interview and सिर्फ temporary नहीं बल्कि permanent टीचर बन गई वहां की. When she passed the interview, she called me. She's like, Ashi, I passed the interview. उसके बाद we said one on one for the session, and she introduced to me the tarot. Okay, so she told me like, Ashi, you are so good with your intuition. तुम जो बोलती हो वो mostly मेरे साथ होता है. तुम tarot reader क्यों नहीं बनते? And I was like, नहीं यार, कुछ भी करूंगी, I would never become a tarot reader. I don't want to. And I used to say like, ठीक है ना, intuition से काम चल रहा है. Why do I need tarot? And she was like, nahi, you should go for it. Okay, after that session, like only 2 days, 2 दिन में मैंने, मुझे याद है, मेरा टैरो डेक ऑर्डर कर दिया था, मैंने एक वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर दिया था. Just 2 days and I took the decision of becoming a tarot reader. But why? After that call, I like constantly having this intuition and it was so loud. कभी कभी अंदर से इतनी लाउड आवाज होती है that you cannot ignore it. क्योंकि मैं already काफी टाइम से ignore कर रही थी. So this time the sound was so loud and so clear कि भाई जाओ and you have to become a tarot reader. Took me 2 days and I already registered the workshop. I learned tarot and now here I am. Okay, sitting in the podcast explaining what tarot is all about. Because tarot actually so magically chose me. I was like, in myself, like, what has happened? What has changed? Like, I was so amazed by my own self. And I think this is the most magical thing that ever happened to me. Okay, so when tarot wants to, or when any healing modality wants to attract you, they attract you in the most magical way. Okay, so finally, I have seen so many myths, so many woohoo concepts going around. So I thought, no, when I'm going to teach tarot, when I'm going to do tarot readings, it is going to be different. All right, all thanks to the mentors, right? So now you all know about it, how I got into tarot, how I become a tarot reader. Let's unlock this world together and make it more meaningful and purposeful, right? So let's begin. Okay, so we are going to cover all these topics today. So sit tight with your notebook and pen and note down all the aha moments because I want to know them in the comments below. Okay, all right. So, firstly, we are going to see the history of tarot. देखो, I know not many people in India are interested into history, right? We are not someone जो magnifying glass से ताजमहल को देखता है.
ओके, बट स्टिल अगर हम कुछ लर्न कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो आया कहाँ से, ठीक है? जैसे कि कोई हमसे बाद में पूछे तो हमें पता हो कि भाई है क्या, ठीक है? तो हम बस ब्रीफ लेने वाले हैं कि कैसे टैरो आया, कैसे यूज़ होता था पहले और आज टैरो की जर्नी क्या रही है, ठीक है? जैसे मैंने अपनी जर्नी बताई, टैरो की भी तो जर्नी है ना, तो लेट्स रिस्पेक्ट एवरीवन्स जर्नी। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी हिस्ट्री ऑफ टैरो, देन व्हाट टैरो रियली इज़। इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री के बाद जितनी चीजें, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो। ऑलराइट, सो व्हाट टैरो रियली इज, आखिर में है क्या टैरो, क्यों इतना ज्यादा लोगों के मन में फियर है, क्यों इतना ज्यादा लोग ऐसे ना अजीब सी फीलिंग्स लेकर आते हैं टैरो को लेकर, किसी को बोल रहे कि आई एम अ टैरो रीडर, वो अलग ही निगाह से देखते हैं, तो भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि देयर आर मिथ्स, क्योंकि देयर आर कुछ लोगों ने कुछ वो फैला दिए हैं, डरा दिया लोगों को, टैरो रीडिंग करके डरा दिया, बेसिकली प्रेडिक्ट कर दिया फ्यूचर। तो वी आर टुडे गोइंग टू एक्चुअली सी कि टैरो है क्या, एंड इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? हु इज टैरो फॉर, किसके लिए है, सब कर सकते हैं, क्यों करना है, वाई टैरो, वाई ओनली टैरो, सो मेनी थिंग्स, ठीक है? कौन कौन से एरियाज हैं हमारी लाइफ के जिसमें हमारी टैरो हेल्प कर सकता है। ऑलराइट, हाउ डज टैरो वर्क्स, ये जानना बहुत जरूरी है कि टैरो काम कैसे करता है। एंड लास्ट, लास्ट में आई हैव केप्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो मैथ्स है, ठीक है? जो वूहू वूहू आई डोंट नो व्हाट दे से कॉन्सेप्ट है, वी आर गोइंग टू अनकवर ऑल ऑफ दीस टुडे। ओके, सो take a moment, relax, and shall we begin? Let me know in the comments below. All right, so one, two, and three, let's begin. Firstly, as I said, history of tarot, let's discover it. ओके, सो सबसे पहले जो टैरो देखा गया था, इट वाज अराउंड 1400 और आई वुड से लेट 13th सेंचुरी, ऑलराइट, समवेयर बिटवीन 1375, ऑलराइट। तो तब हमारे पास टैरो आया था एज प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है? यूरोप में देखा गया था, ठीक है? यूरोपियंस के पास देखा गया था टैरो को 1375 और 14th सेंचुरी में, समवेयर अराउंड दैट। और उस समय यूरोपियंस, जो वेल्दी यूरोपियंस होते थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था, ठीक है, वेल्दीएस्ट यूरोपियन, उनके पास टैरो प्लेइंग कार्ड्स की तरह देखा जाता था। जैसे आज हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स है ना, ऊनो है एंड सो मेनी अदर्स, वैसे देखा गया था टैरो को सबसे पहले यूरोप में। फिर 1700s में, 17th सेंचुरी में डिविनेशन टूल मान लिया गया कि टैरो को हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर देखने के लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड ऑल दैट लेने के लिए। फाइनली 19th सेंचुरी में अकल्ट ग्रुप्स जो थे उस टाइम पर, जो वेल्दिएस्ट अकल्ट ग्रुप थे, उनके पास टैरो गया, यहाँ से चेंज आया, ठीक है? अभी तक प्लेइंग कार्ड्स और मजा मस्ती के लिए टैरो को यूज किया जा रहा था, 19th सेंचुरी में जब अकल्ट ग्रुप के पास गया, क्योंकि अकल्ट ग्रुप है, दे हैव ह्यूज नॉलेज, जब उन्होंने टैरो कार्ड्स को देखा, दे आर लाइक they cannot be used just as playing cards, सिर्फ playing cards की तरह यूज नहीं कर सकते, because उन्होंने देखा that tarot cards are rich in symbolism, they are rich in numerology, they cover so many aspects and they can be the better tool to help and improve our life. तो वहां से टैरो की कहानी फाइनली अच्छे के लिए शिफ्ट हुई, ठीक है? तो एक अकल्ट ग्रुप था जिनका नाम था गोल्डन डॉन अकल्ट ग्रुप, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी चीजों को समेट कर एक अच्छा सा ओरिजिनल टैरो डेक तैयार किया, जिसका नाम रखा गया वाइट राइडर वेट टैरो डेक। ओके, एंड दिस इज द ओनली टैरो डेक एंड द वाइडली यूज्ड टैरो डेक दैट ऑल द टैरो रीडर्स हैव, ठीक है? एंड अपनी टैरो जर्नी भी हम इसी टैरो डेक के साथ शुरू करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज ओरिजिनल, इट हैज सो मेनी पिक्चर्स, सिंबल्स, नंबर्स एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है? फिर 1970s में हमने इसको पर्सनल डेवलपमेंट टूल की तरह लेना स्टार्ट किया, एंड इट मेक्स सेंस, जब कोई चीज इतनी ज्यादा रिच है सिंबोलिज्म में, गाइडेंस देने में, तो उसको एक ऐसा टूल बनाना चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है? तो जैसा मैंने कहा था, वी आर गोइंग टू कीप इट ब्रीफ, सो दिस वाज द होल हिस्ट्री अबाउट इट। ओके, moving forward, we are going to see what tarot really is. ओके, टैरो आखिर है क्या? टैरो सिर्फ क्या पेपर है जिस पे पिक्चर्स बने हैं, जिस पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, कलर्स हैं? क्या पेंटिंग, क्या सिर्फ पेंटिंग को काट के एंड टैरो रीडर या टैरो कार्ड्स बनाती हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है?
तो टैरो कार्ड्स आर नॉट जस्ट रैंडम पीसेस ऑफ पेपर। रैंडम पीसेस ऑफ पेपर तो कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी उस पे इतना सब कुछ होगा, राइट? सो आई वांट यू कि आज से आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो टैरो को लेकर, ठीक है? बिकॉज दैट इज द मेन एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन, टू चेंज हाउ वी आर सीइंग टैरो, बिकॉज इट इज so much more than that, ठीक है? So think of them like a storybook of your inner world, just like we have storybooks, but हम आउटर रियलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। टैरो की हेल्प से टैरो को ऐसा मानो कि जो आपके अंदर चल रहा है, जो वट एवर इज गोइंग इन साइड ऑफ यू, टैरो उसको सामने लेकर आता है। तो जो कितनी अच्छी बात है कि हमारे कुछ अंदर चल रहा है एंड हम सैड है, पर हमें नहीं पता कि हम क्यों सैड है, ठीक है? क्या शिफ्ट करने की जरूरत है, वो चीज टैरो हमें सामने दिखा देता है। यू आर फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है? बिकॉज ऑफ यू आर फीलिंग सैड बिकॉज you are you are not doing good in your life, you are not taking action in your life, you are not working on your goals, इसलिए आप सैड हो क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो सोचो, आपको पता नहीं था, बहुत बार ऐसा होता है, हम सबके साथ होता है कि हम कुछ ना कुछ अंदर हम फील कर रहे होते हैं, हम अच्छा नहीं लग रहा होता, बट हमें रीजन नहीं पता होता है कि क्या है, ठीक है? सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, टैरो कैन टेल यू कि क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है एंड कैसे ठीक हो सकता है, ठीक है? तो टैरो को टेक इट एज अ स्टोरी बुक। इट इज अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट हैपनिंग इनसाइड ऑफ यू। जैसे हमारा शीशा होता है, इट एग्जैक्टली टेल्स अस जो हम दिखाते हैं, ठीक है? जो हम है वही हमारा शीशा दिखा रहा है, नॉट इंटरनली बट एक्सटर्नली। बट टैरो एक ऐसी चीज है जो हमारा इनसाइड ऑफ मिरर है, इनसाइडर मिरर बोल लो, ठीक है? वो हमारी मिरर करता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। ऑलराइट। सो बहुत सारे जो हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जो हमारे पैटर्न्स होते हैं लाइफ में। पैटर्न्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में गए, समझ में आता है, पर आप हर बार एक टॉक्सिक पार्टनर को ही अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज अ पैटर्न। तो इमेजिन, लाइक टैरो आपको बता सकता है कि वो एक पैटर्न है और उसको कैसे हील करना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम तुम एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करो एंड फिर से उस टॉक्सिसिटी में मत फंसो। All right. Take tarot as a tool that helps you understand what your heart and mind are trying to say. More often, people ask me when it comes to their passion. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, मोस्टली आज के जमाने में सब यही पूछते हैं कि पैशन क्या है, एंड आई एम ग्रेटफुल कि वी आर फाइनली गेटिंग अवेयरनेस टू वर्क टुवर्ड्स आवर पैशन। पैशन, ओके। सो आपका पैशन आपके हार्ट से डिसाइड होता है, राइट? पर हम माइंड को सुनते हैं, हार्ट को नहीं सुनते हैं, या हम दोनों में दिमाग में और हमारे दिल में लड़ाई चलती रहती है कि ये प्रोफेशन, ये प्रोफेशन। टैरो इज द टूल जो तुम्हें बताएगा कि एग्जैक्टली सुननी किसकी है और इसको किसकी सुनकर तुम आगे लाइफ में अच्छा करो। वंडरफुल, राइट? सो टैरो इज नॉट जस्ट समथिंग कि बस ऐसे हवा में कुछ भी किसी ने बना दिया एंड नाउ पीपल आर यूजिंग इट। नहीं, सी कैन यू सी, लाइक इंटरनली जो चीज हमें दिख नहीं रही है, जो हमें इतना ज्यादा परेशान कर रही है, जो बांध के रखती है, वो हम जान सकते हैं टैरो से, ठीक है? एंड वंडरफुली, वंडरफुली हर एक टैरो का कार्ड ना हमारी ही लाइफ के अलग अलग चैप्टर्स के बारे में बताता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेती हूँ लवर्स कार्ड, ठीक है? वी हैव द लवर्स कार्ड, मेजर आर्काना, जो हमें बताता है हमारी लव लाइफ के बारे में, जो बताता है कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, आप एक सोलमेट रिलेशनशिप में हो। तो ये आपका एक एरिया ऑफ लाइफ है, रिलेशनशिप्स, राइट? एंड टैरो बता रहा है उसके बारे में। सो हर एक कार्ड लिटरली टेल्स अ स्टोरी अबाउट योर लाइफ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव हाउ मेनी कार्ड्स वी हैव। सो इन टोटल वी हैव 78 कार्ड्स, ठीक है? 78 कार्ड्स हैं टोटल हमारे पास। अब इन 78 कार्ड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? डिवाइड किया गया है। 22 मेजर आर्काना कार्ड है और 50 माइनर आर्काना कार्ड है। मेजर आर्काना मतलब ऐसे कार्ड्स जो हमें बताते हैं मेजर इवेंट्स के बारे में, कि हमारे लाइफ में मेजर इवेंट्स क्या होने वाले हैं, लाइक शादी, लाइक जॉब, लाइक बिजनेस। ये सारे क्या है? हमारे मेजर इवेंट्स हैं, लाइक बर्थ, लाइक डेथ, ठीक है? तो 22 मेजर कार्ड्स होते हैं हमारे पास, जो हमारी लाइफ में क्या बिग लेसन हमें लर्न करना है, क्या बड़े बड़े इवेंट्स हमारी लाइफ में होने वाले हैं, वो सारी चीजें हमारे मेजर आर्काना बताते हैं। ये मोस्टली होते हैं 0 से लेके 21 तक। एंड ये 0 से लेके 21 तक ना,
Oh my god, they literally covered the entire story of your life. Start from the fool. The fool matlab we begin, we get birth into this on this planet, right? So fool से हम start करते हैं and then we end the cycle on death. ठीक है, so all these 22 cards told you about your life story. जैसा हमने पहले बोला था 56 माइनर कार्ड्स होते हैं. माइनर कार्ड्स मतलब जो हमारे डे टू डे हमारी लाइफ में जो लेसन हमें सीखने हैं, जो डे टू डे हम एक्शंस ले सकते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारे 56 माइनर आर्काना कार्ड्स बताते हैं. अब इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं क्योंकि भाई क्लैरिटी चाहिए ना. टैरो से हम चाहते क्या है? टैरो से हम क्लैरिटी चाहते हैं. तो जितना ज्यादा क्लियरली टैरो में बताएगा उसके लिए टैरो को डिवाइड होना पड़ता है. ओके, सो 56 कार्ड्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 40 नंबर कार्ड्स में और 16 कोड कार्ड्स में. अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 सूट्स होते हैं. ठीक है, टैरो में 4 सूट्स होते हैं. वी हैव wands, we have cups, we have swords and we have pentacles. Okay, so suit of wands, suit of pentacles, suit of swords and suit of cups. ठीक है, हर एक सूट्स में we have 1 to 10 cards. ठीक है, ace of cups, ace of wands, ace of pentacles, then 10 of cups, 10 of pentacles. Right, so you are getting it. तो छोटे छोटे एक्शंस आपकी ग्रोथ बताते हैं पेंटिकल्स. ठीक है, एस से शुरू करा था मतलब पहला कुछ स्टेप लिया है आपने जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ पर लेकर जाएगा. 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपने ऑलरेडी बहुत सारा वेल्थ, बहुत सारी मनी अपने लाइफ में ऑलरेडी कमा ली है, सिक्योर कर लिया अपने आप को. ये हो गए हमारे नंबर कार्ड्स. हर सूट के साथ ऐसा ही होता है, 10 कार्ड्स होते हैं हर एक सूट में. फिर हमारे पास है 16 कोड कार्ड्स. कोड कार्ड्स आर द इम्पोर्टेंट कार्ड्स. ठीक है, एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग कार्ड्स. कोड कार्ड्स हमें बताते हैं पर्सनालिटीज, ऐसी पर्सनालिटीज जो हमारे आसपास में है. ठीक है, जैसे आसपास में हमारे वी हैव पेरेंट्स, वी हैव लाइक ब्रदर, वी हैव मोर पीपल जिनको हम सोशल मीडिया पे देखते हैं. तो कोड कार्ड्स कवर करते हैं पर्सनालिटीज ऑफ पीपल. राइट, ये होते हैं पेजेस. पेजेस मतलब जो शुरू शुरू में अभी कुछ नया करना स्टार्ट किया है. नाइट इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्शन, मूवमेंट. क्वीन इज ऑल अबाउट क्वीन, वी ऑल नो आवर मदर्स, राइट? सो क्वीन एंड देन किंग. तो ये सारी पर्सनालिटीज हैं जो हमारी लाइफ में होती हैं, और ये पर्सनालिटीज कैसे हमारी लाइफ को और हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती हैं. ओके, so this was all the division and how tarot cards are divided to tell the story of our life. Okay, I hope you find this really like helpful, or you understand this, right? Let me know. Type yes so that I can get to know here that you are understanding what I'm telling you, and if you are finding it interesting or not. Moving forward, we have now this is important. Okay, this is like the most important thing in the entire session. Okay, apart from myths. Okay, thank you, Manisha. So this is very important. So listen carefully. Tarot is not about predicting the future like magic or predictions or something else, but it is more like creating your future. Now, here I'm going to explain you so much, so I hope you are sitting back and listening to me. All right. So, do you remember we have talked about myths? Do you remember we have talked about कि लोग fearful होते हैं टैरो कार्ड्स को लेकर. लोगों के मन में अलग ही तरीके का अंधविश्वास और डर भरा हुआ है टैरो को लेकर, एंड वो आज भी देखने को मिलता है, नो डाउट, स्पेशली ओल्डर जनरेशन में. ठीक है, तो लेट्स सी कि ऐसा क्यों है. तो देखो, आई डोंट नो व्हेन दिस स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ ये नहीं पता चला. ठीक है, बट ये डर है लोगों में आज भी. क्यों? क्योंकि कभी किसी टैरो रीडर ने शायद कोई ऐसी मिस्टेक कर दी या कुछ ऐसा बता दिया जिससे जो एक इंसान था उसको फियरफुल लगा, उसको स्केरी लगा. ठीक है, तो उस टैरो रीडर ने गलती क्या करी? उस टैरो रीडर ने उस बंदे का या बंदी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया, फ्यूचर बता दिया. राइट, उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे फ्यूचर में ये होने वाला, एंड वो कुछ स्केरी सा होगा. बेसिकली उस टैरो रीडर ने क्या करा? उस टैरो रीडर को उस बंदा जो ऑलरेडी प्रॉब्लम लेकर आया था, जो सॉल्यूशन के लिए आया था, उससे और डर के साथ भर दिया. ठीक है, नाउ पीपल डू दिस फॉर वेरियस रीजन, कि वो क्लाइंट्स वापस आते रहे उनके पास, एंड ऑल दोस रीजंस वी आर नॉट गोइंग देयर. बट ये कुछ हुआ ऐसा, तो इस वजह से लोगों के मन में ना वो फैलते फैलते डर बन गया कि टैरो रीडर भैया
फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देंगे, पता नहीं क्या बता देंगे, अगर उन्होंने कुछ गलत बता दिया तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर नहीं बदला जा सकता, एंड लॉट मोर थिंग। सो लेट मी टेल यू कि क्या है क्यों है। सबसे पहले, टैरो को कभी भी प्रेडिक्शन के लिए मत यूज करो, ठीक है। वैसे तो ये टैरो रीडर पे डिपेंड करता है कि वो लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज करे, बट बिकॉज वी आर हेयर, क्योंकि हम लर्न करना चाहते हैं, तो देखते हैं, ठीक है। तो टैरो को हम कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं रखते हैं। देखो, टैरो इज अ टूल जो स्पिरिचुअल टूल है, जो बनाया गया लोगों को गाइडेंस देने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि भाई ये करो, ये तुम्हारी लाइफ में चल रहा है, ये होगा, ऐसे तुम चेंज कर सकते हो। टैरो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। टैरो को अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए यूज करो, ना कि अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, या फिर उससे डीमोटिवेट होने के लिए या फियरफुल होने के लिए। नहीं नहीं नहीं, वो हमारा मोटिव यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। टैरो हमें फ्री करता है। टैरो बताता है कि ये हमारे लिमिटिंग बिलीफ है, ये रेमेडी है, इसको कर लो। मतलब रेमेडी मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ कागज पे रख लिख के यहाँ रख दो वहां रख दो, नहीं। रेमेडी मतलब इनर वर्क कर लो, अपनी इनर हीलिंग कर लो, ठीक है। जो लिमिटिंग बिलीफ्स है उनको हटाकर एम्पावरिंग बिलीफ्स ले आओ अपने माइंड में। अफर्मेशन कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो, एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो वो करता है टैरो, ठीक है। टैरो हमें ये पावर देता है। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, अगर आप कभी भी किसी कोच के पास, किसी टैरो रीडर के पास जाते हो, एंड तुम्हें लगता है कि वो टैरो रीडर तुम्हारी पावर ले रहा है, तुम्हें ये बता रहा है कि ये होगा फ्यूचर में, और तुम कुछ नहीं कर सकते, वो बंदा या बंदी ही खराब है, ठीक है। टैरो रीडर्स आर गोइंग टू एम्पावर यू, गोइंग टू गिव यू लाइक ये चाबी है तुम्हारे हाथ में, डोर अनलॉक करो, जो लाइफ चाहिए उसको बनाओ। इट इज ऑल अबाउट दैट। टैरो, तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके सी दिस इज द फ्यूचर। अभी तुम्हारी करंट एनर्जी ऐसी है क्योंकि तुम थोड़ी सी डरी हुई हो, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो। तुम्हारे कार्ड्स कह रहे हैं कि फिगर आउट करो चीजें, राइटिंग करो, जर्नलिंग करो, फिगर आउट करो कौन सा ऑप्शन चाहिए, एंड उस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ो। एंड कार्ड्स ये भी बताते हैं कि अगर तुम उस ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ती हो, यू आर गोइंग टू डू अमेजिंग इन योर लाइफ। तो मतलब देख रहे हो कितनी लाइट एनर्जी है, लोग उसे खामखा इतना ज्यादा हैवी बना देते हैं। सो नो, हम टैरो को प्रेडिक्शन के लिए यूज नहीं करेंगे, हम टैरो को गाइडेंस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। कि ये बताया टैरो ने, इसको मैं कैसे अपनी लाइफ में यूज कर सकता हूँ, क्या मैं अपने आप में चेंज ला सकता हूँ। बेसिकली अपने आप को चेंज करना। पर्सनल डेवलपमेंट टूल का मतलब क्या है, कि हम उसे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे हैं। आगे क्या होने वाला है ये जान के अभी डरना चाहते हैं? नहीं। अभी डरने से क्या हो जाएगा? यू चेंज योर सेल्फ, फ्यूचर कैन बी चेंज, एंड वी हैव न्यूमरस एग्जाम्पल। आज के जमाने में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो रैक्स टू रिचेस गए हैं लोग, ठीक है। वो भी अगर किसी से पूछ कर कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है वो जान लेते, और ट्राई ही नहीं करते हैं, तो वो शायद रिच नहीं बन पाते, या वो अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाते। सो इट्स मोर अबाउट हाउ चेंजिंग योर सेल्फ, ठीक है। सो अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट मत करो, अपने आप को जानो। अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। बिकॉज टैरो इज कनेक्टेड विद योर सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो किससे कनेक्टेड है? वो कनेक्टेड है आपकी हायर सेल्फ से, आपकी फ्यूचर सेल्फ से, यूनिवर्स से। एंड यूनिवर्स को ऑलरेडी पता है कि तुम्हारे आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में। वो तुम्हें गाइडेंस देते हैं कि ये करो, चेंज योर एनर्जी एंड योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी चेंज, ठीक है। सो आज से प्लीज स्टॉप सेइंग टैरो इज फॉर प्रेडिक्शन। टैरो इज गोइंग टू हेल्प यू, टैरो हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग योर फ्यूचर, ठीक है। टैरो एम्पावर्स यू टू क्रिएट, इट गिव्स यू योर पावर बैक। लोग कहते हैं ना, क्लेम योर एनर्जी बैक, ठीक है। तो अपनी एनर्जी अपने हाथ में जहां जहां बांट रखी है, जैसे टैरो रीडर या किसी और के पास, ब्रिंग इट बैक टू योरसेल्फ एंड यूज दैट एनर्जी, यूज दैट गाइडेंस टू क्रिएट योर ओन लाइफ। इट इज ऑल अबाउट क्रिएशन रादर देन प्रेडिक्शन। ओके, if you got this, let me know in the comments, ठीक है। Type a yes or type if this was aha moment or if this was mind blowing moment. Okay, type it in the comments so that I can see it here. Moving forward. Okay, I'm waiting for someone to tell me if this was aha moment or mind blowing moment. Okay, moving forward, we have how does tarot help us in doing so?
अब मैंने इतना सब कुछ बता तो दिया, बट एक्चुअली में टैरो कैसे हेल्प करता है, हाउ इट कैन डू ऑल दीज थिंग्स, लेट्स डाइव डीप इनटू इट। आई होप यू आर रेडी। सो सबसे पहले टैरो हमारी हेल्प करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने किसी भी मैनिफेस्टेशन कोच की वीडियो देखी है, दे ऑलवेज से, एंड अब तो रिसर्च ने भी प्रूव किया है कि हमारी लाइफ जो है, जो हम अभी देख रहे हैं अपनी आउटर रियलिटी में, वो 95%, इवन मोर देन 95% डिपेंड करती है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या सोच रहे हैं। क्यों आजकल इतनी ज्यादा बात हो रही है लिमिटिंग बिलीफ्स पर, क्यों इतने लोग बात कर रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को लेकर? क्योंकि भाई तुम्हारी लाइफ ही मोर देन 95% तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट कर रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है। एंड इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ इनर वर्क टू फिगर आउट कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। बहुत वर्क लगता है, बहुत इनर वर्क। पर गेस, हमारे पास टैरो कार्ड्स है, हमारे पास टैरो है जो हमारी हेल्प कर सकता है। हमें लाइक 2 मिनट में पता चल जाएगा कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि टैरो कैसे वर्क करता है, टैरो वर्क करता है एनर्जी से, राइट? तो जैसा आप फील कर रहे हो, जैसा आपने इतने सालों में फील किया है, इट इज देयर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड तो बचपन से प्रोग्राम होता है ना, जब वी आर 7 और 8 years old। तो यू कम टू मी, यू आस्क द क्वेश्चन कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आई शफल द कार्ड एंड आई टोल्ड यू कि ये चल रहा है। एज सिंपल एज दैट। सोचो कितना सारा इनर वर्क, कितनी सारी एनर्जी और टाइम तुम्हारा बच गया इफ यू आर यूजिंग टैरो कार्ड्स। ठीक है? सो योर माइंड नोज मोर देन यू रियलाइज। जो मैंने बोला, हमारी इंट्यूशन को, हमारी इनर सेल्फ को, हायर सेल्फ को, वट एवर यू वांट कॉल इट, उसको सब पता है, बिकॉज वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हायर पावर से। ओके, एंड कार्ड ब्रिंग हिडन थॉट्स, पैटर्न, जैसे मैंने बताया, इमोशंस टू द सरफेस। भाई सामने कार्ड एंड यू आर नोइंग कि ये सबकॉन्शियस ब्लॉक है मेरा। इमेजिन इट, लाइक टेल मी इफ दिस वाज लाइक वाओ, वाओ मोमेंट फॉर यू। ओके, ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव हेल्प एक्सेस इंट्यूशन। नाउ इंट्यूशन क्या है? तो इसका बहुत, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो सबके समझ में आए। इंट्यूशन इज दैट वॉइस, जब हम स्कूल में एग्जाम के टाइम पर एमसीक्यू देते हैं ना, तो हम एमसीक्यू देते टाइम ए ऑप्शन बी ऑप्शन, ए ऑप्शन बी ऑप्शन, तो एक वॉइस होती है जो कहती है ए ऑप्शन, एंड हम अपनी माइंड की सुनते हैं और बी ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। ठीक है? एग्जाम के बाद हम बाहर जाते हैं, वी डिस्कस विद आवर फ्रेंड्स एंड दे से ए ऑप्शन करेक्ट था, एंड देन वी आर लाइक अरे यार, मुझे लगा था कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दैट, वो जो लगा था ना, वो तुम्हारा इंट्यूशन था। ठीक है? अगर तुम उस समय इंट्यूशन की सुन लेते, यू वुड हैव गेट दैट 1 mark। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट योर इंट्यूशन एक्चुअली इज। आई डोंट थिंक कि लोगों ने ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया कि ये और वो। सिंपल, वही आवाज जो तुम एग्जाम टाइम पर इग्नोर करते हो, वही आवाज है। ओके, तो इनर नोइंग दैट यू गेट विदाउट लॉजिक, क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं है, क्योंकि उसमें माइंड नहीं है, तो लोग उसको सुनते नहीं है, क्वेश्चन का आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं। ओके, टैरो गिव्स योर इंट्यूशन अ वॉइस। कैसे? सपोज, फॉर एग्जांपल, आई ऑलवेज यूज दिस वन ट्रिक इन माय लाइफ। मैं जब भी मॉर्निंग में, व्हेनेवर आई हैव डन विद माय प्रेयर एंड ऑल, आई टेक आउट टैरो कार्ड फॉर माय डे। ठीक है? कि हाउ माय डे इज गोइंग टू बी। ठीक है? I picked up the card and that card shows me something. I feel that energy. I got this intuition कि आज ये करना है, and I do it and I get that. ठीक है? तो टैरो आपके इंट्यूशन को एक आवाज दे देता है, क्योंकि इंट्यूशन इज इनटेंजिबल, हम उसे देख नहीं सकते, हम उसे छू नहीं सकते। बट टैरो कार्ड, जब हम इंट्यूशन की सुन के टैरो कार्ड निकालते हैं, टैरो में आ जाता है कि हमारे इंट्यूशन हमसे क्या कहना चाहता है। अगेन, बेस्ट हैक, राइट? Okay, moving forward. I hope you all are getting it. Please do let me know in the comments. Type a yes or type a wow or something you wanna say. Moving forward, we have, remember we were talking about कि टैरो कैसे हमारी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा है, ये टॉपिक चल रहा है। We are talking about how. ठीक है? तो टैरो वर्क करता है हमारी एनर्जी पर और हमारी इंटेंशन पर। जो पुराने ज़माने में किसी टैरो रीडर ने फ़ियरफुल मिथ फैलाया है ना, उसकी इंटेंशन डेफ़िनेटली सही नहीं थी। ओके, सो हमारा जो टैरो है ना, वो हमारी एनर्जी पकड़ता है। बिकॉज़ आई डोंट नो इफ यू नो, पर हमारे रिलिजन में कहा जाता है कि वी आर ऑल वन। सब कहते हैं, आई होप सबने सुना था
कि हम सब हैं तो एक ही, हम सबने सुना होगा आई गेस। ठीक है, तो वो जो एक है हम लोग, वो कैसे हैं? एनर्जेटिक लेवल पर, ठीक है, क्वांटम लेवल पर हम सब लोग एक हैं। तो टैरो कार्ड इज द स्पिरिचुअल टूल, राइट? तो टैरो हमारी एनर्जी पकड़ता है। आपने वीडियो को लाइक किया, आई गॉट योर एनर्जी इन द वे यू वर फीलिंग, ठीक है, it catches your energy from the quantum field. I don't know how, but this happened magically. All right, I got your energy, how you were feeling. Sometimes I even feel it in my own body. अगर कोई बहुत ज्यादा hurt हुआ होता है और वो इंसान मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है, I feel that. All right, because it is all happening energetically. Okay, so energy is everything. ठीक है, we all are made up of energy. Even our human body is 99.99% of energy, because we are made up of atoms, right? So we are energy. Everything is energy. हमारे thoughts, हमारे emotions, everything. And that is why tarot is the best tool, because ये energy के साथ connect करता है। तो सोचो कितना deeper level पे ये connect करता है लोगों के साथ। Okay, so when you ask a question with clear energy and intention, the cards reflect that. आपकी कार्ड आपकी एनर्जी बताता है। इफ यू आर सैड, इफ यू आर फीलिंग सैड, आपकी एनर्जी कैसी है क्वांटम फील्ड में? इट्स सैड। दैट इज गोइंग टू रीच द टैरो रीडर एंड दैट इज कैचेस बाय द कार्ड। ओके, ओके, फॉर एग्जांपल गूगल सर्च। नाउ आई एम गिविंग यू द बेस्ट एग्जांपल दैट आई कैन। टेल मी वन थिंग। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक फूड एग्जांपल, ठीक है। आपका इमेजिन करो आपका शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, ठीक है, आपका मन कर रहा है शाही पनीर खाने का एंड यू हैवंट सर्चड एनीवेयर, आपने कहीं भी सर्च नहीं किया है शाही पनीर के बारे में, आप बस सोच रहे हो, आप बस उसको फील कर रहे हो कि खाना है एंड यू पिक्ड अप योर फोन, यू वेंट ऑन गूगल सर्च और आपने गूगल खोला, तो या तो गूगल सर्च के टॉप पर शाही पनीर आ जाएगा या फिर आप स्क्रॉल करोगे फीड में तो कहीं ना कहीं शाही पनीर दिख जाएगा। लेट मी नो अगर ऐसा आप लोग के साथ हुआ है, ड्रॉप अ यस, बिकॉज मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं सोच रही थी एंड वो आ गया। ओके, तो ड्रॉप अ यस अगर ये हुआ है तो। सो ऐसे ही, क्योंकि आपकी एनर्जी वो थी शाही पनीर खाने की, शाही पनीर की जो एनर्जी थी दोनों ने मैच करा एंड यू गेट दैट। सेम हैपेंस विद द टैरो। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स ऑल सिंपल, इट्स ऑल मैजिकल, इट्स ऑल मेकिंग सेंस। आई होप इफ इट इज मेकिंग सेंस राइट डाउन एमएस इन द कमेंट, ठीक है। Moving forward, so next we have support decision making plus reflection. Now देखो, जैसा मैंने शायद पहले बोला था अभी आप लोगों को कि कोई भी कभी भी अपनी पावर किसी और को नहीं देनी है, ठीक है। किसी भी इंसान के पास, वेदर अ कोच, वेदर अ टैरो रीडर, और किसी के पास भी अगर आप गाइडेंस के लिए जा रहे हो, कभी भी अपनी पावर से मत दो। कभी भी उससे ये मत बोलो कि तुम मुझे बता दो कि मैं क्या डिसीजन लूं, नहीं। तुम्हारा यूनिक पाथ है, तुम्हें भोलेनाथ ने या यूनिवर्स ने वो पावर दी है कि तुम अपने डिसीजन खुद लो। सपोज, मतलब समझो इस बात को कि कितनी ज्यादा यू नो प्योर पावर है तुम्हारे पास जो तुम दूसरों को दे रहे हो। तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम दूसरों को दे रहे हो। अगर तुम दूसरों से कह रहे हो कि मेक डिसीजन फॉर मी, नेवर से दैट, ठीक है। तो टैरो के साथ भी वही है, टैरो डज नॉट मेक डिसीजन फॉर यू बट इट एम्पावर्स यू। इट एम्पावर्स यू कि टेक डिसीजन, ठीक है। और वो स्लाइटली ये भी बता देता है कि कौन सा डिसीजन, स्लाइटली और काफी हद तक, बट उस गाइडेंस को सुनना, उसको अप्लाई करना, उस पर एक्शन लेना, इट्स ऑल ऑन टू यू, इट्स ऑन टू यू, राइट। तो इट गिव्स क्लैरिटी टू चूज कॉन्शियसली, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें पता है, सबकॉन्शियसली हमें ऑलरेडी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, बट कॉन्शियसली हम कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो टैरो हमारी हेल्प करता है टैप इन करने में सबकॉन्शियस माइंड में, और जो डिसीजन सही है उसको हम कार्ड की फॉर्म में सामने देख लेते हैं कि ये डिसीजन ठीक है एंड वी टेक दैट। ऑलराइट, सो इट्स लाइक अ मिरर शोइंग व्हाट पाथ यू आर ऑन एंड व्हाट यू नीड टू चेंज। अमेजिंग। जैसा मैंने बोला था, टैरो क्या बता रहा है, करंट एनर्जी तुम्हारी, जैसा तुम अभी फील कर रहे हो, जिस राह पे तुम अभी चल रहे हो अपने करियर में या फिर अपनी जॉब में, कहीं कहीं पर भी, तो जहां पर तुम अभी हो, अगर तुम इसी रोड पर आगे चलते हो तो तुम्हारी लाइफ में क्या होगा, क्या तुम उन ड्रीम्स तक अचीव करोगे या नहीं, या फिर कोई ब्लॉकेजेस हैं तो, ठीक है।
तो टैरो बता रहा है कि तुम सही डायरेक्शन पर हो, पर ये ब्लॉकेजेस हैं। अपने आप को शिफ्ट करो, अपने अपने टाइम को शिफ्ट करो या फिर अपने हैबिट्स को चेंज करो। तो टैरो एग्जैक्टली बताता है व्हाट डू यू नीड टू चेंज अगेन टू एम्पावर यू टू गिव द होल्ड इन योर हैंड्स। हु इज टैरो फॉर? किसके लिए है टैरो? ओके, फर्स्टली टैरो इज फॉर एवरीवन। ठीक है, हमने देखा ना टैरो की जर्नी, कहाँ टैरो बिल्कुल अकल्ट ग्रुप ने और वेल्दियस्ट लोगों ने शुरू किया था। नाउ वी हैव इट नॉर्मली इन आवर हैंड्स। तभी टैरो को इतना ज्यादा वूहू कॉन्सेप्ट बता दिया जा रहा है, क्योंकि समझो राइट, सबको एक्सेस है इस टाइम, तो हर कोई सीख सकता है। बट टैरो को अगर आप रीडिंग दे रहे हो किसी को या अपने लिए भी कर रहे हो, तो आई होप आप अपने लिए भी रीडिंग करो, तो अपने आप को एम्पावर करो, अपने आप को गाइडेंस दो, ना कि अपने आप को फियर्स के साथ भर लो। ओ माय गॉड, ये होने वाला है, इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा? ये पता चला ना कि ये होने वाला है, टैरो से ही पूछो कि इसको हैंडल कैसे करना है। व्हाई सो मच ऑफ फियर, राइट? तो टैरो इज फॉर एवरीवन, पीपल हु आर फीलिंग स्टक और कंफ्यूज इन देयर लाइफ। ठीक है, उनको लग रहा है कि वो मेहनत करे जा रहे हैं पर एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। टैरो इज गोइंग टू हेल्प यू अगेन, कोई ना कोई पैटर्न है जो टैरो बता देगा। ठीक है, क्यूरियस अबाउट द लाइफ पर्पस एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आज के time में so many people are talking about life purpose and they finally realized कि भाई वो यहाँ पर हैं तो कोई ना कोई उनकी कॉलिंग है, कोई ना कोई उनका लाइफ पर्पस है। तो टैरो उसमें अमेजिंगली हेल्प करता है, मतलब टैरो ने मेरी खुद बहुत हेल्प करी है। ठीक है, टू नो योर लाइफ पर्पस इफ यू वांट इमोशनल क्लैरिटी। नाउ इमोशनल क्लैरिटी मोस्टली कम्स इन रिलेशनशिप्स। ठीक है, कि ये इंसान मेरे लिए सही है, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, इधर इस इंसान के साथ शादी करूं या उस इंसान के। सो इमोशनल क्लैरिटी लेकर आता है। अगेन आई वुड से कि पहले अपने आप को चेंज करो, टैरो की हेल्प से अपनी अपनी पर्सनल लाइफ को चेंज करो, देन थिंक अबाउट इन एनी अदर डायरेक्शन, राइट? ड्रॉन टू हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी भैया, if you are into healing, if you want to become a spiritual person or come into spirituality, tarot is going to help you a lot. और इफ यू आर समवन लाइक मी हु इज इनटू सेल्फ डिस्कवरी, मैं आई ही टैरो में अगर उस इंसिडेंस के बाद अगर टैरो में मैं रुकी हूँ इतने टाइम, बिकॉज इट हैज हेल्प मी। ठीक है, मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स ओवरकम करने में, मेरे क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या पैटर्न्स हैं जो मुझे रोक रहे हैं, उस सब में और खुद को जानने में मेरी टैरो ने सबसे ज्यादा हेल्प करी है। ओके, सो टैरो इज योर फ्रेंड एंड नॉट योर एनिमी। स्टॉप इट। टैरो से बेटर टूल नहीं है, टैरो से अच्छा कोई फ्रेंड नहीं है। मतलब आई एम on this point now कि leave me with the cards and I'm going to spend the most quality time with my cards. Okay, next, areas tarot can help you with, or you can say why to use tarot, why only tarot. Okay, let's move. So as we have already discussed so much about it already, tarot can help you in getting clarity in your career. Will this job aligns with me? Is this partner right for me? Relationships, finances, तो money blockages. Money blockages is something जिसके बारे में अभी भी लोग उतने ज्यादा अवेयर नहीं है, पर कुछ हद तक हाँ लोग हैं जो हैं। तो मनी ब्लॉकेजेस, अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो टैरो कैन हेल्प यू। टैरो कैन टेल यू कि कौन सा ऐसा लिमिटिंग बिलीफ है मनी को लेकर जो तुम्हारी लाइफ में पैसे को आने नहीं दे रहा है। अगेन वी हैव इमोशनल पैटर्न्स, व्हाट बिलीफ इज होल्डिंग मी बैक। देखो, अगर तुमने अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज पे काम किया कि अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को ओवरकम करके उसमें एम्पावरिंग बिलीफ्स अगर तुमने इनकलकेट कर लिया अपने माइंड में, तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है। मतलब हर एरिया ऑफ लाइफ में यू आर गोइंग टू बी सॉर्टेड। ठीक है, टैरो गिव्स यू क्लैरिटी वेयर द माइंड इज फॉगी। माइंड, कैन यू सी दिस गर्ल, शी हैज टू क्रॉस रोड्स। ठीक है, कि यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, एंड ओ माय गॉड, टैरो क्रॉस रोड्स पर जब इंसान खड़ा और टैरो से पूछे, आई थिंक टैरो वर्क्स लाइक 100% करेक्टली देयर। तो जहाँ पर माइंड हमारा फॉगी हो जाता है और माइंड हमें सबसे ज्यादा कोई कंफ्यूज करता है, तो वो हमारा माइंड है। तो जहाँ माइंड काम नहीं करता वहां टैरो काम करता है, बिकॉज टैरो को माइंड से लेना देना नहीं है, तुम्हारी एनर्जी बता दी। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, हाउ डज टैरो वर्क? इंपॉर्टेंट। So I want you, if you're here, close your eyes, or even if you don't want to close your eyes, it's okay. Imagine this. ठीक है, अपने mind में एक picture बनाओ and imagine this. You are feeling something inside. ठीक है, maybe you are feeling sad, happy, confused, or anything. ठीक है,
एंड समटाइम, जैसे मैंने पहले बोला था, समटाइम्स यू डोंट नो कि क्या फील हो रहा है, बस अच्छा नहीं लग रहा है. आई सेड इट टू मेनी टाइम्स प्रीवियसली, अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, कोई फीलिंग का नाम भी नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा. इवन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर भी जब तुम्हें, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारी माइंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस टाइम पर इफ यू आर यूजिंग टेरो, वो बता देगा कि भाई ये चल रहा है. यू आर फीलिंग सैड बिकॉज वो काम तुमने कहा था पर तुमने करा नहीं, यू ब्रोक योर प्रॉमिस. ठीक है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, शायद मैंने आज कुछ करा ही नहीं, टाइम वेस्ट हो गया एंड ऑल दैट. ठीक है, इवन इफ यू डोंट से इट, दैट फीलिंग इज स्टिल देयर. ठीक है, और हमने पढ़ा, हमने इतनी देर में देखा कि टैरो हमारी सिर्फ एनर्जी से मतलब रखता है, हमारी इंटेंशन से मतलब रखता है. तो फीलिंग तो है ना हमारे अंदर कि अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो फीलिंग इज देयर. तो टैरो इज गोइंग टू गेट दैट फीलिंग, कैच दैट फीलिंग एनर्जेटिकली, एंड इट इज गोइंग टू टेल यू कि ये है, right? And that is what we call energy. That is like a mood that your heart is feeling, and it is going to tell you like, okay, this is going on. Moving forward, we have, now when you ask a question, what happened? Your heart already knows the answer. जैसा मैंने कहा, your heart कह लो, your subconscious mind कह लो, because these are the things जो connected है higher self से, universe से. ठीक है, तो इन सबको ऑलरेडी आंसर पता होता है, बट हम कभी भी अपने साथ इतना बैठते ही नहीं है. लोग कहते हैं ना, जब कोचेस कहते हैं कि अपने साथ बैठो, सिट विद योरसेल्फ फॉर लाइक 5 मिनट्स, एंड वी आर लाइक, खुद के साथ क्यों बैठना है? ठीक है, आई होप सबके साथ ही ऐसा होता है, बट नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं. राइट, तो होता है सबके साथ, बट मैंने देखा है. तो जब आप बैठ नहीं सकते खुद के साथ, जब आप इनर वर्क नहीं कर सकते एंड यू वांट टू नो द आंसर, एट दैट टाइम टैरो हेल्प. ठीक है, बिकॉज योर फीलिंग नोज द आंसर, योर एनर्जी नोज द आंसर, तो इट गाइड्स यू. ठीक है, टैरो कार्ड्स कैन ब्रिंग दैट आंसर आउट, जैसा मैंने ऑलरेडी 3 टाइम्स एक्सप्लेन किया. Now, when I pull a card, okay, for example, you ask me a question and I pull a card, I just not simply guess the answer. It's going to be about like prediction again. Okay, so I do not guess the answer. I feel that card. I trust my intuition the most. Okay, so I pulled a card. If the card is saying something, but I'm feeling something different, I'm going to first pick that intuition. कि ये है, ठीक है, बिकॉज द इंट्यूशन इज समथिंग जो कनेक्टेड है, हम दोनों कनेक्टेड है एनर्जेटिकली, सो आई ट्रस्ट दैट फर्स्ट, एंड देन थ्रू द कार्ड आई टेल द गाइडेंस. ऑल राइट, एंड इट्स लाइक द वॉइस इनसाइड मी दैट whispers, hey, this is what they really need to hear. ठीक है, सो यू नो, इंट्यूशन इज समथिंग जो ओवर टाइम डेवलप होता है. इट्स नॉट समथिंग कि एक बार, कोई कोई इंट्यूटिवली गिफ्टेड होते हैं लाइक आई वाज, बट आई नॉट यूज्ड टू लिसन टू इट, बट फाइनली जब मैंने टैरो की हेल्प से अपने इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट किया, it becomes so much stronger, and up to I only listen to my intuition. Okay, I sometimes I was like, I don't need even the cards, I know what I'm feeling, I know what you are feeling. Okay, so this is what happens. So you have to practice, you have to sit with your cards, you have to, you know, form a relationship with your card. How you form a relationship with your cards, just like natural human beings, हम लोगों के साथ कैसे relationship build करते हैं, we meet the people, we talk with them, do that, do the same thing with your cards. When you build a connection now, you get so amazing answer, even you will get amazed कि भाई इसको कैसे पता, कैसे आ गया. Sometimes मेरे साथ आज भी होता है, I'm like, oh my goodness, how did they know? Okay, moving forward, most interesting part, and I'm waiting for that. We are about to finish it almost. So I hope you all are here. Do let me know in the comments that you are ready. Type ready in the chat box. Okay, are you ready for the myths? To burst the myths. Okay, let's move ahead. Number one myth जो लोगों को होता है, you have to be psychic. Okay, I first want to ask them कि psychic का मतलब क्या होता है. I don't truly feel कि something mystical or something psychic is like there and here. वो इंट्यूशन ही होता है, बट लोग उसको साइकिक बोल के एक अलग ही यू नो कंस्ट्रक्टिव नेम दे देते हैं. दिस इज व्हाट जस्ट आई थिंक, नो हेट टू एवरी एनीवन एल्स. ठीक है, बट इफ यू नो, इट्स अमेजिंग, बट इट्स नॉट जस्ट साइकिक, or it's just not that the people who are psychic can do the reading. No, it's not that. You only have to trust your intuition, that's all. You don't have to be psychic, you don't have to call yourself the psychic. Just you know,
Tell yourself that you are a intuitive tarot reader. It is the best way to address yourself. ठीक है. So it's all about your intuition. It's all about what you're feeling. Trust that intuition, and that intuition is built over time. Not only gifted people can do tarot reading, or not only psychic people can do tarot reading. No, you have to be intuitive, and intuition सबके अंदर है भाई. जो मैंने एग्जांपल दिया था ना मल्टीपल चॉइस का, आई होप सबने ही वो एक बार अपनी लाइफ में ऐसा करा होगा कि मुझे पता था वो आंसर है. वही वॉइस इज योर इंट्यूशन. यू जस्ट हैव टू डेवलप इट, एंड वो प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है. ऑलराइट. आई होप इट इज क्लियर. नो साइकिक एबिलिटीज और समथिंग लाइक दैट. नेक्स्ट, tarot cards are evil. Oh my god. Something that can change your life, something that can give you guidance, something that can just tell you कि भाई do this and your life is going to change if you take action of it. Can something or someone जो आपको गाइड करता है, जो आपकी लाइफ को बेटर बनाता है, जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है, हाउ कैन दैट बी इविल? उसमें कुछ भी नहीं है यार ऐसा. दीज आर जस्ट द पेपर जिस पे अच्छी सी इमेजेस बनी हुई हैं, सिंबल्स बने हुए हैं. यू जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड पिक आउट अ मैसेज आउट ऑफ द कार्ड्स. दैट इज दैट सिंपल. ओके. एंड एज आई सेड, आपकी इंटेंशन. इफ यू आर डूइंग समवन्स टैरो रीडिंग, तो आपकी टैरो रीडर की इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करती है. ठीक है. अगर आप कोई भी काम, नॉट ओनली टैरो रीडिंग, अगर आप कोई भी काम गुड इंटेंशन से करते हो, इस इंटेंशन से करते हो कि सामने वाले को सॉल्यूशन मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है इसीलिए तुम्हारे पास आ रहा है. ठीक है. तो अगर आपकी गुड इंटेंशन है कि उसको मैं गाइडेंस दूं, उसको लाइफ में अपना एक डिसीजन मिल जाए, यू आर बैंग ऑन. यू कैन नेवर बी रॉन्ग. बिकॉज कहते हैं ना, भगवान इंटेंशन देखते हैं. अगर इंटेंशन सही है, यू आर गोइंग टू रॉक इट इन योर लाइफ, नो मैटर लोग क्या कहते हैं. I still see people जो tarot reading को tarot reader. So I like in my family I don't introduce that. तो मेरे घर वालों को पता है, वो खुश हैं बस. That's all. I don't have to tell everyone. अगर लोग पता है कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है, मत बताओ. Don't tell them. Don't have to tell everybody. ठीक है. तुम्हारी लाइफ में तुम्हें रिजल्ट मिल रहा है, सामने वाले को मिल रहा है. That's all. ठीक है. Moving forward we have ओह माय गॉड. जब मैं ये सुनती हूँ मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है. टैरो रीडर्स कैन रीड माय माइंड. नो दे कैन नॉट. ठीक है. नो दे कैन नॉट रीड योर माइंड. आई एम नॉट दैट गर्ल जो सबके माइंड रीड कर रही है एंड बहुत बड़े बड़े शोज पे जाके सबके माइंड रीड करके सबको शॉक कर रही है. आई एम नॉट दैट. आई एम नॉट दैट गर्ल. एंड नो टैरो रीडर कैन रीड योर माइंड अनलेस एंड अनटिल उन्होंने उस लड़की की तरह सीखा है माइंड को रीड करना. नो वी कैन नॉट. ठीक है. तो तुम जितना क्वेश्चन पूछोगे, तुम्हारी जो एनर्जी होगी, जो टैरो कार्ड्स बताएंगे, ओनली दैट वी आर गोइंग टू नो. हमें नहीं पता चलेगा तुमने किसको पास्ट में हर्ट किया है या किसने तुम्हें चीट किया है. नहीं, वी आर नॉट गोना नो दैट. ओके. हम बस एनर्जी में टैपिंग करते हैं. तो कार्ड्स बताते हैं, इंट्यूशन बताता है, दैट्स ऑल. एंड आई टेल देम. ओके. सो दिस इज रिडिक, दिस इज बेकार. मतलब मत सुनो इसकी. No one can read your mind unless and until they have practiced a lot in their life. Like that women, right? Tarot will tell me my future and it's scary. This, ये जो एक मिथ है, और ये जिसने भी ये कॉन्सेप्ट शुरू किया ना फियरफुलनेस का, उन्होंने सबकी वाट लगा दी. एंड देयर आर स्टिल पीपल आई नो. तो खैर कोई बात नहीं. जो कर रहे हैं उनके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जो अब स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन को देखने के बाद, आई वांट यू ऑल टू हैव गुड इंटेंशन, to become mindful of the work you are doing, to love what you are doing, and trust your intuition. Okay. Intention, gratitude, and lots of love for the art or for the work you are doing. Okay. Tarot will tell me my future and it's scary. Nobody is going to tell your future unless and until you ask them. Okay. They are not going to predict your future. They are not going to know what exactly is in your future. And future can be changed. ये दिमाग में अपने रखो. ठीक है. इतना अपने दिमाग में रखो, your future can be changed. Your future is in your hand. You are sitting on the driver's seat of your life, not anybody else. तो तुम्हारे हाथ में स्टीयरिंग है. You can turn it in any way you want. All right. So no, future is not scary. Future can be changed, and future can be changed by you and only you. ठीक है. So it does not tell your future. It shows what path you are currently on and how to shift it. ठीक है. अगर सही डायरेक्शन में नहीं आगे जा रहे हो,
तो टैरो तुम्हें बता देगा कि थोड़ा शिफ्ट करो और ये चेंज करो एंड यू आर गोइंग टू रॉकेट इन लाइफ. ओके. Okay. The final one, how to know you can trust your tarot reader. You connect with their energy, you feel good in their presence. For example, if you are watching this session and you are loving my energy, you are smiling and you are like enjoying the session, so you are connecting with my energy, that means you can trust me. Okay. You feel good in their presence, the most important, because आपको एक gut feeling आ जाती है अगर आप किसी के साथ सही फील नहीं कर रहे हो, अगर आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, दैट पर्सन इज नॉट फॉर यू. ऑलराइट. टैरो रीडर इज ऑलवेज अ गुड लिसनर. अगर आप किसी के पास जा रहे हो और अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो और वो इंसान सुनने की जगह बोलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, दैट पर्सन इज नॉट फॉर यू. क्योंकि वो अगर सही से सुनेगा नहीं तो सही से समझेगा नहीं, और सही से समझेगा नहीं तो तुम्हें सही गाइडेंस नहीं देगा. तो वहां से भाग जाओ. Okay. A person who knows the card and trusts their intuition the most. Okay. How am I different? I love to tell you that. I love what I do. I love tarot card, as I already told you, and I hope you can sense this by now. And I love and trust my intuition the most. Above everything else, I trust my intuition. If 100 people are saying to me that this person is correct, if my intuition is telling me that they are not, I cut off from them. And it turns out to be true. Okay. That's why I say I'm an intuitive tarot reader and I believe in empowering people. Okay. Because before everything else, I was a life coach. I started my journey as a life coach. Okay. So I believe in empowering people rather than filling them with fear. Okay. So no fear, only energy, only empowering beliefs. Okay. That was all from my side. Um, If you guys want to learn tarot from me, if you connect with me, you can definitely find all the details how to contact me in the description below, or you can contact me on my YouTube channel. Thank you so much. Amazing, amazing. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I've got some problem. Actually, I'm not listening to sound from the computer directly. Okay, okay. Anyways. Okay. So thank you so much, Ashi, for sharing your wonderful insights. And friends, now it's your turn. And if you are ready, you can ask your questions and Ashi will answer. Meanwhile, मेरे पास कुछ questions आए हैं, so let me ask. एक तो ये Sure. है कि सबसे पहले जो आशी जो टैरो कार्ड जो यूज करते हैं उनके पास इंट्यूशन कैसे आती है जब वो कार्ड प्ले करते हैं. इंट्यूशन कैसे. ओके. सो सर, जैसा मैंने अभी बताया कि इंट्यूशन जब हम प्रैक्टिस करते हैं टैरो कार्ड, सो हाउ आई बिल्ड माय इंट्यूशन सो स्ट्रांगली इज दैट व्हेन आई वाज लर्निंग टैरो आई यूज्ड टू पिक अप वन कार्ड फॉर माय सेल्फ डेली. ठीक है. सो मॉर्निंग में आई यूज्ड टू सिट विद द कार्ड्स, आई यूज्ड टू टॉक विद देम, आई यूज्ड टू कनेक्ट विद देम, एंड देन आई यूज्ड टू पिक वन कार्ड एज माय डेज गाइडेंस, today's guidance. All right. So when I picked one card, it came out and I picked it up. I feel the energy, what the card is trying to say to me, and how my body is telling me the messages. And then I used to journal about it. So when you practice it daily and you journal it, you actually in the form of journal, you get to know कि okay क्या क्या कार्ड बता रहा है, what I am feeling. तो अगर वो सिंक में होता है जो कार्ड बता रहा है जो मुझे लगा, it's perfect. And when you do it over time, you build that intuition that you don't need to journal it again. राइट. थैंक यू सो मच. ओके. सो क्या टैरो रीडिंग कभी मिसलीड कर सकती है या गलत हो सकती है. टैरो रीडिंग गलत तो नहीं हो सकती है डेफिनेटली. ठीक है. क्योंकि अगेन टैरो एनर्जी से कनेक्ट करता है, तो आप जैसा फील कर रहे हो वैसा ही आपके कार्ड्स में आता है. बट इट डिपेंड्स मोर टू द टैरो रीडर कि वो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या वो सही एनर्जी पिक कर रहे हैं या नहीं. जैसे मैंने बोला कि इंट्यूशन कम्स विद टाइम.
कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं लाइक आई वाज एंड आई यूज्ड टू लिसन टू इट, बट कुछ लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अगर आपने सही से प्रैक्टिस करा एंड यू हैव जर्नल इट, पता होना चाहिए कि आपका इंट्यूशन सही बोल रहा है या नहीं। समटाइम्स अगर टैरो रीडर पे ज्यादा डिपेंड करता है, उसने नहीं अगर प्रैक्टिस करा है, वो कुछ मिस यू नो कुछ अलग बता देता है, तभी गलत होता है। कार्ड्स कैन नेवर बी रॉन्ग, बिकॉज वो तो एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो वो तो सच बताते हैं। ओके। Okay. Thank you so much once again. So आप अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करते हो रीडिंग के दौरान? कई बार ऐसा कहा जाता है कि समटाइम्स व्हेन यू गिव हीलिंग और व्हेन यू डू हीलिंग फॉर समवन, सो उनकी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसमें कुछ ऐसा होता है, और अगर हाँ, तो आप अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करते हो या ज़रूरी है? Definitely. Because it's all energetic work, it's all energetically going. So definitely sometimes when people are got tortured in their life or they got so hurt in their life, I definitely feel that energy, like the heavy energy in my body itself. So when I'm doing tarot readings, I mostly try to take deep breaths before I start doing tarot reading or any healing session. I take deep breaths, I ground my energy. All right, and then I mostly visualize that a white light is protecting me, that the divine light is protecting me, and then I do some of my healing techniques before I go into the tarot. Because before I start the tarot reading, I obviously ask the person कि what are the questions, तो वहीं से पता चल जाता है कि so much is going on in their life. So that's when I try to do all my grounding work and then I tap into them. Okay. Yes. Thank you. Thank you so much once again. So please expect a delay in my response क्योंकि मेरे पास जो वॉइस आ रही है बहुत लेट आ रही है. I don't know why. No So problem, sir. It's okay. so friends, if you have any question, you can also ask. Yes, अच्छा, definitely. एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि क्या आप लोग सेल्फ रीडिंग भी करते हो? अपने लिए भी रीडिंग करते हो या आपके लिए कोई और करता है? अरे नहीं, आई डू माई ओन सेल्फ रीडिंग एवरी सिंगल डे। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि मैं अपने लिए सेल्फ रीडिंग नहीं करती हूँ। तो जस्ट इमेजिन कि मैं दूसरों को गाइड कर रही हूँ पर मैं खुद को गाइड नहीं कर पा रही हूँ। दिस इज द वर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आई डू माई ओन टैरो रीडिंग, जैसे मैंने पहले बताया। सबसे पहले कार्ड ऑफ द डे आना ही आना है, जिससे मुझे पता हो कि हाउ माई डे इज गोइंग। फिर इफ आई हैव एनी क्वेश्चन देन आई डेफिनेटली लाइक डू ऑल द रिचुअल्स एंड आस्क द कार्ड। And I think asking the card is the best thing that I do, because I have taken so many decisions in my life based on what tarot readings have said to me, and they've always proven to be the best one. If you have learned something और अगर आप उसे खुद के benefit के लिए use नहीं कर पाते हो, I think उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. So yes, definitely we do self readings. Okay. Yes. थैंक यू सो मच वंस अगेन. सो एक क्वेश्चन है कि किसी को कैसे पता चले कि दैट नाउ दिस इज अ टाइम टू गो फॉर टैरो रीडिंग और यस आई एम रेडी फॉर टैरो रीडिंग? तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कि इस टाइम पर मुझे टैरो रीडिंग के लिए जाना चाहिए। इट्स मोर दैट, जैसे मैंने बोला कि लोग मानते नहीं है इस बात को, पर सब में वो इंट्यूटिव वॉइस होती ही है, इनबिल्ट है वो सबके अंदर। ठीक है, तो जब उनको लगता है, वो जब वो कहते हैं ना कि जब उनको लगता है, तो वो लगता है उनका इंट्यूशन ही है जो उनको बोलता है कि भाई टैरो रीडिंग लेनी है। या फिर मोस्टली मेरे पास लोग तब आते हैं जब वो बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे होते हैं लाइफ में, राइट. या उनको कोई जॉब से रिलेटेड डिसीजन या मैरिज से रिलेटेड डिसीजन लेना होता है, तब आ जाते हैं। पीपल से दैट बट दे लिसन टू देयर कॉलिंग, वो तभी आते हैं बिकॉज टैरो रीडिंग और जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं, व्हेन यू फील द कॉलिंग ओनली देन यू विल कम, व्हेन यू आर रेडी फॉर इट। सो इट्स ऑल डिवाइन, इट्स लाइक energetic. ऑलराइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन. सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क. एक अक्सर कहा जाता है कि जैसे आप कह रहे हो कि इसमें आप एनर्जीज को रीड करते हो कि उनकी एनर्जी क्या कहती है उस टाइम पर,
तो Hmm. अगर वो पर्सन जो आपके पास आ रहा है, अगर वो इमोशनली इस समय स्टक है, तो क्या उसकी वो एनर्जी इफेक्ट करेगी, जो रीडिंग है आपकी उसको भी इफेक्ट करेगी? डेफिनेटली, जैसा मैंने बोला कि हमारी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज इमोशन एंड हाउ यू आर फीलिंग, राइट? तो अगर वो स्टक फील कर रहे हैं तो वो कार्ड्स, क्योंकि उनकी एनर्जी और उनके इमोशंस को पिक कर रहे हैं, तो ऐसे कार्ड सामने आएंगे जो एग्जैक्टली दिखाएंगे कि वो स्टक है। जैसे वी हैव सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जिसमें वी हैव दिस लेडी जिसकी आईज पे पट्टी बंधी है, एंड सोर्ड से वो पूरी बंधी हुई है, बट उसके हाथ वगैरह भी बंधे हैं, बट उसके पैर खुले हुए हैं, तो इट शोज कि इंसान मेंटली ब्लॉक्ड है। ठीक है, वैसे वो फ्री है, इट्स ही और शी इज फ्री टोटली टू टेक द डिसीजन टू गो अहेड, पर उनके मेंटल इतने ज्यादा ब्लॉक्स है कि उनको स्टक फील हो रहा है या ब्लॉक फील हो रहा है। कार्ड डेफिनेटली शो दैट एनर्जी, एंड देयर आर वेरियस डिफरेंट कार्ड जो स्टक एनर्जी को शो करते ओके, गुड। हैं। कोई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहा हो रीडिंग के दौरान? अनफॉरगेटेबल, okay, so there is this one incident, it's about my own self reading when I was doing. I have so once upon a Yes, few months back, what happened when I was starting tarot, like I was into tarot for like 4 or 5 months. Okay, so one day at night, I was just sitting with my cards and I asked, like, just like curiosity, like people have. So I also have this curiosity. Can they tell me what are the subconscious blocks that are going on in my mind? Okay, so I just shuffle the cards, do all the rituals, and then I asked if there are any subconscious blocks that are stopping me to go in the direction of my dreams. And you won't believe, I shuffled the cards, they came out, and I was having all that fears at the back of the mind जो मुझे subconsciously पता था कि है, पर मैं consciously उन्हें accept नहीं करती थी. On the card, the whole spread shows me कि I have fear of judgment at that time. I had fear of being seen. So all these fears showed up in the form of card, and I was amazed. I'm like, I have these fears. So definitely, tarot cards have helped me to overcome these also, because एक बार subconsciously पता चल गया through cards कि भाई ये still, these fears are still there. I worked on them, and finally I'm here overcoming all my fears and beliefs. ओके, Yes. थैंक यू सो मच वंस अगेन. You're welcome. So my last question of this session is, any message or any final tip for the people who want to go for tarot reading, और जो नहीं चाहते हैं tarot के लिए, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज, या फिर जो अपनी जर्नी एज अ टैरो रीडर शुरू करना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज? ओके, सो ऑल द पीपल जो अपने जिन्होंने आज तक टैरो रीडिंग नहीं लिया और जो टैरो रीडिंग के लिए जाना चाहते हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि पहले किसी अच्छे टैरो रीडर को जाओ, उसकी वीडियोस वगैरह देखो, उनकी एनर्जी के साथ थोड़ा कनेक्ट करो, एंड इफ यू फील दैट कनेक्ट, जैसे मैंने बताया था, इफ यू फील दैट कनेक्शन कि हाँ ये कनेक्ट कर रही हूँ मैं इनकी एनर्जी के साथ, गो विद अ टैरो रीडर. For the people who do not want to go for tarot reading, it's absolutely fine. You will know it in the future whenever you get called to. तो जब भी आपको लगेगा, you will go for it definitely. And for the ones जो अपनी tarot reading start करना चाहते हैं, again, I wish you all the very best. And tarot is the spiritual tool that can really help you in changing your own life. And अगर आप inspire हो किसी और की life change करने में, it is again amazing tool. So I wish you all the very best. Please go and learn tarot from someone जो आपको empower करे and does not fill you with all those beliefs. All right. So find a good tarot reader. That is a must. आप खुद भी टैरो रीडिंग कराते हो, कोर्स Yes. Yes. Tarot सिखाते course. हो? I do. Yes. ओके, गुड, Yes. वंडरफुल. सो फ्रेंड्स, अगर आप सीखना चाहते हैं, देन इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. Yes. And with Definitely. If this, you yeah, now we are coming to the end of the session, of this truly magical and enlightening session. A huge thank you to every one of you. One moment. So, thank you once again. Your energy, your presence, and beautiful curiosity made this session, even more powerful.
And of course, a heartfelt thank you to our incredible guest, Aashi Rastogi, for sharing such wonderful, deep wisdom, clarity, and soulful insights about the world of tarot. So, आज का जो session है, is not just about learning how tarot works. You know, it was about reconnecting with your own inner guidance, opening up to the universal messages for you, and remembering that you are always supported. कि कोई तो है Yes. आपको जो सपोर्ट करने के लिए बैठा है. And if you felt drawn to Ashi's energy and you would like to connect with her, you want to explore more for personal sessions or follow her journey, then you can connect with her. Once the session will be over, I'll mention her details in the description and you can connect with her directly. Remember, the journey, but the answers you are seeking are already within you. टैरो जो है, इट सिंपली होल्ड्स अप अ मिरर, जैसे कि इन्होंने कहा कि आपका मिरर है जो आपके इनसाइड आउट को दिखाता है, राइट? So that you can actually see more clearly, right? And thank you so much, Ashi, once again for coming here, for enlightening all of us. And Thank you. आपकी insights बहुत अच्छी हैं. I really appreciate your wisdom, and thanks to every one of you once again. Yeah. Thank you, sir. Okay, so friends, once again, I'll see you next week with a new topic and a new speaker. Till then, stay healthy, take care, and goodbye. Namaste.